Hello friends, good evening all. This is me Dr. Kailash. I am presenting before you today's lecture, the Odisha Essential Services Maintenance Act of 1980. This video is very much essential for those students who are aspiring for the Opsc UPSC exam. This video is also useful for those employees who are currently working under Government of Odisha, right? And those students who are also pursuing their law degree in various law colleges of Odisha, this video is also a little bit helpful for them in understanding. In this video, we have to analyze each and every part of this law very carefully while dealing with it. Right? Let's discuss one by one. As the Odisha Essential Services Act says itself, means this act is related to the services which is supposed to be essential for the life, essential for the public. Right? We'll discuss everything. Before starting the lecture, let me introduce first. I am Dr. Kailash Chandra Deori. I completed my masters from the OUT Bhubaneswar and I served the Central Bank of India previously as assistant manager. In 2019, after I am practicing the veterinary services under Fisheries and Animal Resource Development, Government of Odisha. So, ଆପଣମାନେ ହଠାତ୍ ମୋତେ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲେ? What is the linking or what is the connections between the constitution and the Oesma? ଆପଣ ଯଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବେ ତାର ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ଯୋଉଟା ଆମର ତାର ଫାଷ୍ଟ ମିରର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ତାକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ୱି ଦି ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଭିଂ solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist sector democratic. The first word we means we যেটা ডিনোট କରୁଛି ମାନେ it gives the sources of the authority to the constitution ମାନେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକମାନେ means we the public have constituted this constitution of the India. Means the source of power of this entire country is the we, means the people. So that's why the great spirit of democratic exists here. ଯେତେବେଳେ we means ଯେତେବେଳେ public we ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକର କିଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ ତାର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାର ଲାଇଫ ତାର କୌଣସି ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେବ at that time the government of India must care of it. The government of India must ensure the justice, liberty, fraternity, the equality at that time. So it is the duty of the government of the India, right? What is the so it is the very spirit of the Constitution of India which has been enshrined in the preamble of our constitution. Recently, ଆପଣ देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 8 of this April से तार स्टेट रे एस्मा द एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट को पास कला हठात किना एटा ए वर्षर न्यूज को से पळै आसिले आमे डिस्कस करिया जे काहे के एसेंशियल सर्विसेज एंड मैनेजमेंट एक्ट को से इंपोज करा गला इन दिस कॉन्टेक्स्ट we know the whole world is experiencing the pathetic situations from the COVID-19 infections. Madhya Pradesh re there was alarming rise of the COVID-19 cases. In order to ensure the health facility, in order to ensure the essential facilities to its citizen in its state, the Madhya Pradesh government declared the Essential Services Management Act (Esma), so that no employee will go in a hartal or will not go for a strike. They have to ensure these essential services for the citizens, right? Before going to the state specific ESMA, we have to analyze the generalized view of the ESMA. In our country has accepted this philosophy of ESMA in the year 1968. So it is also known as ESMA Act of 1968. This is an act of parliament, and as this act has been accepted by the parliament, so that it's a very powerful law. Means this ESMA Act can be extended by the center to any part of its territory, right? As this word says, essential services management act means आमको essential service like आपण आमको health facility हो आमको postal facility हो आमको telegraph facility हो आमको दूरदर्शन facility हो जोटा essential लोकंकर दैनंदिन जीवन सहित associated आमे ताको एंसर करिया पड़ो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब गोटे जिनस मन रखे इन द इंटरेस्ट इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सहित आमे गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सी कंसीडर को निए सेही टाइम रे
किसी किसी सेक्टर को एसेंशियल सर्विस हिसाब से डिक्लेयर करे and that essential service will continue will go with, with without any hindrance. That's why the state must or the center must ensure it. Esma Act 1968 also provisions କରୁଛି different state को ତମେ ତମର respective state ରେ respective ତମେ state specific ESMA issue କରିପାରିବ ଯଦି analyze କରିବା state specific ESMA to the central law of central ESMA then we have a greater or wider perspective of the central ESMA. Right? So ESMA Act କେତେବେଳେ ଲାଗୁ କରାଯିବ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମର impose କରାଗଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ in order to just continue or in order to maintain or restore the essential services for its citizens. Right? Next coming to the federal structure. Federal structure ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର କିଛି ପାୱାର ସେଣ୍ଟର କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର କିଛି ପାୱାର ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପାୱାର ମିନ୍ସ ଦି ଡିଭିଜନ ଅଫ ପାୱାର ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦି ଫେଡରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିଛି ମ୍ୟାଟର୍ସ ଅଛି କିଛି ଆଇଟମ୍ସ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ସେଣ୍ଟର ଓନ୍ଲି ତାର ସେ ତା ଉପରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବ ଯାହାକୁ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ସ କୁହାଯାଏ ତିଆରି କରିପାରିବ ଆଉ କିଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ସେଣ୍ଟର ହିଁ ତାର ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ କରିପାରିବ articles over this center legislates is known as the union list. The subject over which state legislate it is known as the state list. आउ किछि लिस्ट अछि जहा ऊपर बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट तमे दुहे जांको करि परिबे लॉ दैट इज नोन एज कनकरेंट लिस्ट राइट जदि हमें कनकरेंट लिस्ट देखिबा ए एस्मा एक्ट कनकरेंट लिस्ट रे हमरो आसुछि जदि आपण देखिबे in concurrent list state list 3 this is list 3 under the entry number 3 it says preventive detention for reasons connected with the security of the state leave it the maintenance of public order very much important or the maintenance of supplies and services essential to the community means ame amar community को amar public को amar essential service without any obstruction without any hindrance ame taku uninterruptedly taku ame supply kariba it is the prime duty of the state as well as the center या ऊपर both center as well as state legislate करि परिबे upon the state list को आसबे जहां पर only state have wider control अपन जे देखिबे सेथरे एंट्री नंबर 6 एंट्री नंबर 6 रे कहूजी स्टेट पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन ऊपर से फोकस करियो ता ऊपर से एस्मा इशू करि परियो sanitation खाली बड़ बड़ सिटी पे sanitation at grassroots level also right so this is the beautiful structure that has been enshrined in the federal structure of the which has been placed under schedule 7 the Indian constitution right then now we have to discuss the Orissa Essential Services and Maintenance Act of 1998 which is very much important आमे ताकू बर्तन डिस्कशन करिया बिट बाय बिट फर्स्ट पेज रे आपण देखिबे से सेक्शंस 9 टा जाय देछि माने से ओवरऑल व्यू दे देछि कि आमे ए भितरे यारे अंडर रे कोन पढिया राइट इन फर्स्ट द शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट आमे देखिया एसेंशियल सर्विस माने कोन काहे के त मेंटेनेंस करा जा ए सब आमे शॉर्ट टाइटल रो आमे ताकू डेफिनेशंस देखिया सेकंड रे और डेफिनेशंस को आमे एनालाइज करिया इन 3 power to prohibit strike in certain employment जदि किछि एम्प्लॉय माने जदि स्ट्राइक रे जाउछंदी एसेंशियल सर्विस रो एक्चुअली एम्प्लॉय माने देन ए स्ट्राइक को नल एंड भॉइड डिक्लेयर करबा दायित्व स्टेट रो अछि अगेन पावर टू प्रोहिबिट लॉक आउट इन सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट माने जदि एसेंशियल सर्विस रो जदि किछि एम्प्लॉयर जी एम्प्लॉय माने चाकरी देजी से तांको ले लॉक आउट माने एम्प्लॉयर तांको एक्सक्लूजन्स करि परिबो नै से एस्टैब्लिशमेंट रो तां बाहर करि परिबो नै whether may be permanent or may be contractual but pertaining to the essential services 5 रे देखिया पावर टू प्रोहिबिट ले ऑफ इन सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट जदि गोटे एम्प्लॉय से एस्टैब्लिशमेंट से ऑफिस रे जदि एब्सेंट रहिला तो स्ट्राइक रे योगदान कला स्ट्राइक रे मिसला से ताको स्टेट ताको मस्ट
ତାକୁ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରିବ। ତାପରେ ରିଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ମେଜर्स ପକେଇବ। ତାପରେ ଯଦି ଇଲିଗାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ସେଥିରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଇନ୍ କେସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କି ମାସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ କଲେ ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପେନାଲ୍ଟି କ'ଣ ରହିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ। Those people who are instigating, those people who are fueling the agitations of the strike, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉସ୍କଉଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବି ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପେନାଲିଟି ଫର୍ ଦେମ୍। ଦେନ୍ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯଦି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଗଲା ଦେନ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଦି ପାୱାର ଟୁ ଆରେଷ୍ଟ those particular concern or those concerned employee without any warrant, right? Last देखिवा act to override other laws, they এই lawটা আসলা পরে whether it is conflicting with the other laws, other international laws or not, everything we have to decide here. First आपण देखो the Odisha service, the Odisha essential services and maintenance act 1998 जोटा कि 1998 रे enact कराइतला, an act to provide for the maintenance of certain essential services, the normal life of the community in the Odisha state ପାଇଁ ଏଟା specific. Be it enacted by the legislature of the state in the Odisha in the 39th year of the Republic of India. Republic of India 1949 में adopt कले, तार 39 years 1988. Right? Is it clear? This act may be called as the Odisha Essential Services Maintenance Act. First तार title देला. It shall extend to the whole state of the Odisha. तार Odisha ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ. Third, it shall come into force at once. ସେଟା once declare କଲେ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ଯେବେଠୁ ସେ ସାଇନ୍ କରିବେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେବେଠୁ ସେଟା ଇମ୍ପୋଜ ହେଇ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆସିବା ଟୁ ଡେଫିନେସନ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି, ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍। ଆମେ ସବୁ ସେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ସବୁ ସର୍ଭିସକୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ସ କହିପାରିବାନି। ଆମେ ଧର ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ। ଆମେ ସପୋଜ କିଏ କହିବା ମୁଁ ଏଜୁକେସନକୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଭାବିବି, କିଏ କହିବ ମୁଁ ମାଇନିଂକୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଭାବିବି। ନା ନା ନା, वी कैन से लाइक दैट। Law कହୁची any service connected with the supply or distribution of the water with the maintenance of water works, जो सर्विस गुड़ाक पानीय जल सहित एसोसिएटेड, पानीय जल आपनकर जो डिस्ट्रीब्यूशन सहित एसोसिएटेड आ किंबा ता सहित जो तार वर्क रिलेटेड काम सहित एसोसिएटेड सेटा फर्स्ट हमर एसेंशियल सर्विस रे आछे। सेकंड, any service connected with the maintenance of the public health sanitation including hospitals and dispensaries, स्वास्थ्य अपन डाक्तरखाना ए माने भी सब हमर ता सहित एसोसिएटेड सब पर्सन्स माने भी आछन। थर्ड, any service connected with the production, supply, distribution of the electricity including any services under the Odisha State Electricity Board Constitution on the Electricity Act 1948, electricity department uninterrupted supply ପାଇଁ ता से भी essential service रे आछुची। Fourth, any service connected with the transportation of the persons and goods, जोटा कि आमर बस सेवा होची कि गुड्स माने एसेंशियल कमोडिटीज आइटम माने जेमिति कि योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मीट, मिल्क, all these are perishable, the medicines, pharmacy, all these things are coming under the essential service, recently हमर ओडिशा गवर्नमेंट से ଗୋଟେ अमेंडमेंट करथिला, जो माने सफाई कर्मचारी अछंती सैनिटेशन वर्कर तांकू भी ये एसेंशियल सर्विस रे इंक्लूड कर देछि in the context of COVID 2019 infections. स्ट्राइक रो डेफिनेशन से देखिए, स्ट्राइक डेफिनेशन से कहूची बहुत छोट छोट अछि। स्ट्राइक डेफिनेशन जे देखिए ये कहूची स्ट्राइक मीन्स हला means cessation of work by a body, or persons employed in any essential services acting in combinations or concerted refusal under the common understanding or any other persons who are have the been so employed to continue work to the accept employment and तार माने हैला स्ट्राइक माने हैला जदी हम कार्य बंद करूछंती, जदी गोटे सिंगल पर्सन हो किंबा गोटे ग्रुप ऑफ पीपल हो किंबा गोटे एस्टाब्लिशमेंट गोटे डिपार्टमेंट ऑफ होल पीपल होंतु, आइदर सिंगली और इन ग्रुप और एज ए मास से मैंने ऑलवेनिंग करेंगे आम काम करूँ ना, दैट इज इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट इज नोन एज स्ट्राइक। स्ट्राइक रे आउ डेफिनेशन कहूची स्ट्राइक जदी से मैंने कहबे दे आर अनऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी इन पर्सन्स ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, समस्त गोटे मिलित बुझामणा रे से माने कहबे आमे केही ऑफिस जिबु नै,
among the persons who unauthorized absent themselves from the duty under the directions of any persons or persons ମାନେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ କି ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ହଉ ଲୋକଙ୍କର ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ ନ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଆମେ ଚାଲିବୁ ସେକେଣ୍ଡ ରିଫ୍ୟୁଜାଲ ଟୁ ୱାର୍କ ଓଭର ଟାଇମ୍ ମାନେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସର ସେକ୍ଟର ମାନେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଅଛି ଧର ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏନି ହେଲ୍ଥ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ତାର ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ହେଉଛି 6 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଧର କିଛି ଏନି ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ତାକୁ ଯଦି 10 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି କହିବେ ନା ନା ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛି 6 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ମୁଁ 6 ଘଣ୍ଟା ନା ନା ହି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଅର୍ ସି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଓଭର ଟାଇମ୍ କାମ କରିବାକୁ ଯଦି ବି ସେ ମନା କଲେ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କମିଂ ଅଣ୍ଡର ଦି ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ right? Any other conduct which is likely to result or results cessations of substantial retardations of work in essential services ମାନେ essential service को କିଛି जो माने help କରୁଛନ୍ତି कि माने जो माने indirectly support କରୁଛନ୍ତି ସେମିତିରେ ବି କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ ବି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ନେବା that is the unauthorized work or unauthorized activities right then देखिए power to prohibit strikes in certain employments 3 ରେ କହୁଛି 1 ରେ if the state government is satisfied that in public interest it is necessary to or the expedient so to do it may general or special order prohibit strike in any essential service ଯଦି ସରକାର କୁ ଲାଗିଲା କି ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ମାସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ଯିବା ପରେ ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେଇ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେଇ ପର୍ସନ୍ସ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ ଅର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଅର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଅର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ କରିପାରେ ରାଇଟ୍ ସେ ସେକ୍ସନ 2 ଆଉ ସେକ୍ସନ 3 ଯଦି ଆମେ ଆନାଲାଇଜ କରିବା ସେ କହିଛି ସେଇ ଅର୍ଡରଟା ଯେବେବି ସେ ଅର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ କଲା 6 ମନ୍ଥସ୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ ରହିବ ଯଦି ବି ସେଇ ଯଦି ପର୍ସନ୍ସ ନ ଶୁଣୁଛି ଯଦି କାମରେ ଯୋଗଦାନ ନ କରୁଛି ଦେନ୍ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ along with the penalty right coming to the clause 4 upon the issue of an order under the section 1 no employer in sorry in 4 upon the issue of an order under the subsections 1 no persons employed in any essential service to which order relates shall go remain strike ମାନେ ଇନ୍ସ ଯଦି ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଟିମ୍ ସହିତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁ ଯାଉଛି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଭେଟନାରୀ ସର୍ଜନ ଲେଟ୍ ମି ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ସାଇଡ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭେଟନାରୀ ସର୍ଜନ ବଟ୍ ମୋର କିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଆମେ ସପୋଜ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁ ଗଲୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗଲା ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଭେଟନାରୀ ସେକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ ଇଟ୍ସ ଏ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ବହୁତ ଲିଭଲିହୁଡ ଏଥିରେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁ ଗଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁ ଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣି ପକେଇଲା ଆଗରୁ କି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ କରିପାରେ ଯୋଉଟା ବି ହେଉଛି ବିଫୋର ଅର୍ ଆଫ୍ଟର ସେଇ ଅର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲ୍ ଅଫ୍ ନ କରିକି ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖୁଛୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଇଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ any strike declared or commenced whether before or after the issue of the order the persons employed in any such services shall be treated as illegal which I have already told then coming to the power to prohibit lockouts in the certain establishment lockout ମାନେ ହେଲା suppose essential service ର ଗୋଟେ employer ଯିଏ ଚାକିରି ଦେଇଛି ତାକୁ ଲାଗିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦେଇଛି ତାକୁ ଲାଗିଲା କି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କୁ ସପୋଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଥରିଟି ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଗିଲା ନା ନା ଏମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବି right during any serious issues time ସେଇ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ଏସ୍ମା ସେଥିରେ ଲଗେଇ ପାରିବ ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟରକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେବ କି ତମେ ଡିୟର ଏମ୍ପ୍ଲୟର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରିମୁଭ୍ ଦୋଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ରାଇଟ୍ ସେ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ if the state government satisfied that in public interest very important so public interest to government ରଖିକି ସବୁ actions is necessary or expedition to do so maybe general or special order prohibit lockouts in any establishment pertaining to essential service specified in the order any order made on this article shall be published in a manner in the state government leave it ସେ ତାର ସାରାଂଶଟା 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି if the state government is satisfied upon the issue of an order no persons employed in any essential services to which the order relates shall go remain in the strike ଆମେ ତ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସରି ଲକଆଉଟ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ
4 number ଦେଇଛି upon the issue of an order under the sections 1 no employer in the relations to an establishment to which the order applies shall commence any lockout ମାନେ ସେ lockout जो period ରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ prohibit କରିବ state ତାକୁ ତା ଉପରେ actions କରିବ ଯଦି ତାକୁ employer ତା କଥା ନ ଶୁଣୁଛି employer ସେଇ ଟାଇମ୍ ରେ କିଛି ସେମିତି କିଛି actions ନଉଛି then this will be treated as illegal and penalty has been fixed. Then power to prohibit layoff in certain establishment. Establishment layoff ମାନେ ହେଲା ଯଦି employee absent ରହିବ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେ କଣ if the state government is satisfied that in the public interest is necessary or expedient so to do it may general for the specific order prohibit layoff in any ground of the other than shortage of power or natural calamities ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ ରେ ଯଦି shortage of power natural calamities type ରେ ଜାଣି ଶୁଣି ସେ absent ରହିବ ଯଦି ତ work ସେ join ନ କରିବ then it will be treated as illegal. ତାର ସାରାଂଶରେ ସେ ଦେଇଛି 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି no employer in relations to an establishment to which the order applies the layoff or continue layoff in any workman other than a body leave it then whose name is born in the muster roll of such establishment consists such pay of is shortage of power or natural calamities any of the laying of the continuations paying of shall be unless a laying off or continuation of laying off in due to shortage of power or to the natural calamity shall be treated as illegal means ଆମର establishment ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ଖାତା ରହୁଛି ତାକୁ muster rolls କୁହନ୍ତି ଏଥିରେ ଯଦି ସେ absent ରହିଲା any natural calamity the power shortage time ରେ then at that time this will be treated as illegal or this will be treated as a very serious issue right ସେ କହୁଛି 5 ନମ୍ବର କହୁଛି in any employer in relations to an establishment whose layoffs continues to the laying of any workman shall be saying of the continuation shall as be legal under the sections punishable ସେ କହୁଛି କେମିତି ପନିଶ କରାଯିବ 1000 rupees ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ତ 6 months ତାକୁ jail imprisonment ବି ତାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ right last ଆମେ ଦେଖିବା penalty for the illegal strike ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବଧାନ କରାଯାଉଛି any person who commences a strike which is illegal under this act ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଏଇ act କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ସେ strike ରେ କରୁଛି then he will be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 6 months or with a fine may be extended to 500 rupees with both ଆଉ 6 ମାସ ଜେଲ ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ତ 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ବୋଥ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ जो people याको instigate करो जो people याको माने लोगों को उसकेबो you please come and join with us in this strike then any person who instigate or incite or other persons to just friends please read it wise act in further because any preparatory to strike illegal माने जे तक माने मु तको आपण सारा अनुसार कहि दउची कि जे तको instigate करियो कि जे तको persuade करियो कि please come and join with your strike there will be nothing going to happen with you so बेकार जिनस then ताको 1000 rupees fine along with this 1 year jail right imprison for 1 year jail as well as the 1000 rupees fine finally से कहूची power to arrest without warrant रे जोड़ी भी था पुलिस अरेस्ट करिवो क्लासिफिकेशन देजी पुलिस माने गोटे सब इंस्पेक्टर लेवल तळे के अरेस्ट करिवे मिनिमम लेवल पुलिस रे सब इंस्पेक्टर ऊपर ही अरेस्ट करिवो ताकू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बळ रे अरेस्ट करि पारे आ एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉ मींस अदर लॉ जिंते रहउची जेमति कि आपनकर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ए लॉज रे किछि दिया आइछि किछि राइट्स दिया आइछि ए सब जिंस गुडा को ड्यूरिंग हैम्परिंग ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज सप्लाईज देन से गुडा सब नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा जियो राइट सो दीज आर द होल थिंग वी हैव डिस्कस्ड तो हमें आप देखिए बर्तमान जो कोविड 2019 21 मार्च 2020 रे राइट ये कौन कोई देखो वेरी इंपोर्टेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड टू द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ द ओडिशा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट ओडिशा द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हियर बाय प्रोहिबिट स्ट्राइक्स बाय एनी एजेंसी और ग्रुप्स पर्सन्स डीलिंग विथ द सैनिटेशन वर्क इन द यूएलबीज और द स्टेट और बाय द कैजुअल वर्कर्स कनेक्टेड विथ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इन द यूएलबी माने जो माने हमर स्वच्छता सहित कि जो माने परिष्कार परिमल व्यवस्था सहित हम एसोसिएटेड होते सेही संत वर्कर माने कि जो पानी जल जोगाण सहित एसोसिएटेड माने कहीं भी स्ट्राइक करि परिबे नाही आपण देखिबे नंबर 708 21 मार्च 2020 रे कोविड 2019 पई कराई यूएलबी रे अर्बन लोकल बॉडी म्युनिसिपैलिटी रे कहीं भी स्ट्राइक करि परिबे नाही देखो पूरा क्लियर कट लिखा है जी दिस ऑर्डर्स आर रिमेन इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट
of issues of the order माने ए 21 मार्च 2020 रु 6 मास पर्यंत सेटा बलवत्तर रहिबो कंटिन्यू करियो सिमिलरली इन दी 22nd of September 2016 रे right where is the state government are satisfied that in the interest of the public very important so interest of the public is importance देबे it is necessary to prohibit strike in the form of cessation of work by the doctor nurses paramedics technicians other class 4 employees including the contractual employees very important contractual employee भी करि परिबे नाही right connected with the maintenance of the medical service in the government hospital dispensaries in the district headquarters live the jail hospitals like ସେମାନେ ସେମାନେ गवर्नमेंट भी कहितला कि तमे କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିବ କି ଏମାନେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ସିଟିଜେନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗତୁରା ସିଏ ଅର୍ଡର ବାହାର କରିଦେଲା ରାଇଟ୍ now therefore in the exercise of the power conferred by the subsections 1 of the section 3 of the read with the sections 2 also essential service maintenance act 1988 the state government very important do hereby prohibit strikes in the aforesaid service medical sector ସେ କହିଛି no doctors, no paramedics, no health workers, no nurses, no any other services related to the human health, they shall go on strike. Then wind up करिया आमे टोटल एसेंशियल टोटल आमे जो एक्ट को पढ़ले तार मेन फीचर्स कौन कला स्टेट मस्ट प्रोहिबिट करियो स्ट्राइक को अनऑथराइज्ड स्ट्राइक को प्रोहिबिट करियो जदि स्ट्राइक को जाउछंदी आफ्टर द इश्यू और बिफोर द इश्यू ऑफ द ऑर्डर then it will be declared as the illegal for the employee and for the total associations also. There is provisions of the penalty who will disobey the order. Punishment for those persons who are not going according to the order. And we have already discussed the arresting of this that concerned persons without any warrant by the police personnel, not the rank of the sub-inspector. Not below the rank of the sub-inspector. Then किछि किछि लोक कहबे इज इट आर फंडा हमर फंडामेंटल राइट अछि हमको सरकार कहिछि कि हमको हम कॉन्स्टिट्यूशंस कहिछि हमें स्ट्राइक को जीवो किछि किछि लोक ताको अपाइन करंती मत दियंती कि स्ट्राइक इज ए फंडामेंटल राइट हमर कॉन्स्टिट्यूशन आपन जिंस पढिथो राइट टू एसोसिएशन राइट टू जो हमर अछि पीसफुल असेंबली से लोक तो कहते डॉक्टर्स माने कि सपोज नॉट आई एम नॉट टेकिंग द डॉक्टर्स एक्चुअली किछि तो एसेंशियल सर्विस पर्सन माने दी कहबे कि आमको पीसफुल असेंबली करार अछि आम तो कुछ भायोलेंस नोनी विदाउट आर्म्स एम्युनिशन आम करूनु आमटा फंडामेंटल राइट्स अंडर आसुछि तो डिबेट तापर बहुत डिबेट भी चलतला जदि आमे आपण कहबे सर आपण हमको बर्तन काहे कि अगेन आपण हमको फंडामेंटल राइट्स को नउछंती we know हमको जाना दरकार फंडामेंटल राइट्स हमको कोन कहउछि अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज बी से कहउछि राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स हमें शांतिपूर्ण भाव रे हमर हमें हमर शोभा यात्रा करबा हमें हमर प्रोटेस्ट करिया दिस इज गिवन इन आवर आर्टिकल 19(1) बी एमती हम समस्त कहबे कि सर ना 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 हमें तो ताले राइट टू स्ट्राइक हमर गुटे कोन हमें सेटा फंडामेंटल राइट्स नो जदि फंडामेंटल राइट को स्टेट स्नैच आवे को नै जाउची जदि स्टेट ताको नै जाउची देन वाचडॉग ऊपर के बसची सुप्रीम कोर्ट सॉरी कोर्ट बसची हाई कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट बसचंदी देन जुडिशियल इंटरफेयर करिया कथा राइट क्वेश्चंस माइंड थाउ आपन को नेक्स्ट कहउची अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी से कहउची राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी हमको दिया है हमको फ्रीडम्स दिया है आम एसोसिएशंस कर यूनियन कर कोऑपरेटिव कर जदि आम एसोसिएशंस कहीं कहूँ आमर कॉमन पर्सनल सॉरी कॉमन ग्रीवेंसेस आम गवर्नमेंट आगे प्लेस करूँ दैट ए मीनिंग माने जदि प्लेस करार मीनिंग कौन आम साइलेंट प्रोटेस्ट करूँ आम कार्य आम अब्याहत नबू तार इनडायरेक्टली ता मीनिंग कौन कि आम से आम एसोसिएशंस करूँ राइट एटा डिबेट चलला बहुत जगह ये सब जगह एप्लिकेबल एस्मा किछि किछि स्टेट्स किछि किछि जो डिबेट्स चलला एटा को कोर्ट रे डिफरेंट कोर्ट्स एटा को चैलेंज करा गला ए एस्मा डा को किछि स्टेट गवर्नमेंट लागू करंदी किछि स्टेट गवर्नमेंट लागू करंदी नाही इट इज अपॉन द स्टेट jurisdictions
राइट गवर्नमेंट को लगे ना ना मोर एसेंशियल सर्विसेज हमपर हेबार जाउची the citizens of my state are going to affected if the certain sections of the employee going to strike. Then that it is that depends upon the jurisdictions or that depends upon the total opinions of the state. तापर आपन जिनस आपन जो जिनस माइंड रे आछि मो जिनस माइंड रे आछि कि ना ना इट इज माय फंडामेंटल राइट एटा आम माइंड रे आसी आगु आम बहुत आगु बहुत जन लोक माइंड रे ये सब जिनस आसी ना ना स्ट्राइक मु करि पारि मते मोर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देछि अंडर आर्टिकल सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी एंड सब क्लॉज बी so my lord please give me that right, please enforce that right. The famous cases, the Kameshwar Prasad versus State of Bihar in the year 1961, and the AIBA, All India Bank Employee Association versus State National Industrial Tribunals in the year 1960. एमाने केस कले against the respective one कि हमको गोटे राइट टू स्ट्राइक को हमको गोटे लेजिटिमेट ताको पावर दिया जाओ हमको फंडामेंटल राइट एटा को हमको इंक्लूड करा होछ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ହଉ କି ହାଇ କୋର୍ଟ ହଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭେରି ଥୋରଲି ଏଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ କଲେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ନା 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 ତମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ ତମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ମାସ୍ ଅଫ ଦି ପିପୁଲ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହାମ୍ପର ହେବାକୁ ଯାଉଛି your personal interest is different for the public interest. In no circumstances the personal the public interest is going to affect in lieu of your public interest. It's your personal interest. सुप्रीम कोर्ट विभिली से डिस्कशन कले कहना ना 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 तुम्हें एसोसिएशंस करो यूनियन करो मोर से जाए आसे किंतु तुम्हें प्रोटेस्ट तुम्हें स्ट्राइक करि परिबोनी तुम्हें स्ट्राइक करवा द्वारा गोटे मो सिटीजन्स माने कौन अफेक्टेड हेबे तो उई शब्द द्वारा कहितला जो हमर प्रियम्बुल रे सोर्स ऑफ पावर इज गोइंग टू अफेक्टेड तो कॉन्स्टिट्यूशन को बंचा दायित्व कौन हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली द सुप्रीम कोर्ट ना 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 एमती करि परिबो नाही इन दिस फेमस टू जजमेंट्स ए गोटे कॉमन जजमेंट से कॉमन थिंग कहले इन नो एक्जिस्टेंस देयर इज नो एक्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर एम्प्लॉइज टू गो फॉर द स्ट्राइक एम्प्लॉयड और एंगेज्ड इन द एसेंशियल सेक्टर्स then very big very important judgment occurred in the year 2003 that is the Tikka Rangarajan versus state of Tamil Nadu. तार वेरी ब्यूटीफुल गोटे तार स्टोरी अच्छी जस्ट मु 1 मिनट कहूँ स्टेट ऑफ तमिलनाडु तार तमिलनाडु एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 2002 थिला इन द ईयर 2003 कोन हला एथिरे तार बहुत रे क्लरिकल लेवल तार सेक्रेटरीट स्टाफ बहुत जण गवर्नमेंट रो अगेंस्ट रे ट्राई गले तमिलनाडु एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लगी देला गवर्नमेंट तांकर स्टेट गवर्नमेंट लगे देला तो अराउंड 2000 तांकर ग्रुप सी ग्रुप डी तो एम्प्लॉय माने अरेस्ट हे गले ताको नॉल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देला ताको जो चैलेंज करे गले मद्रास हाई कोर्ट रे मद्रास हाई कोर्ट से जो जस्टिस थे से ताको किछि दिन ताको इंटरिम तापर स्टे ऑर्डर देले कहले फर्दर जे जाय इन्वेस्टिगेशन सुनो होई तुम ताको केमिति जेल रे ताको लॉकअप कलो तुम केमिति तुम चाकरी डिसमिस कर देलो राइट सेटा उधर फर्दर जति आपण से केस तो एनालाइज करबे देखिए सेटा फर्दर सेटा सुप्रीम कोर्ट रे अपील हैला सुप्रीम कोर्ट रे टीके रंगराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु टीके रंगराजन आपण जति मार्क्सिस्ट स्टेट से लड़ुतले ऑन द बिहाफ ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुप्रीम कोर्ट जतरा पुन सेटा को आउता एनालाइज कले ए केस दुटा नेले कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एज वेल द एआईबीए वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स ए से केस दुटा को से नेक अगेन से तांकर जजमेंट को से अफेयर रखेले से कहले एसेंशियल सर्विस सेक्टर्स रो एम्प्लॉय माने एही भी स्ट्राइक रे जाई परिबो नाही जदि इफ एस्मा लागू होला देन स्टेट रो लॉ से एप्लीकेबल हो he again told the government employees have no legal moral and equitable rights in the context or when the essential service is concerned तांकर कौन सी लीगल राइट्स नहीं टू गो फॉर द स्ट्राइक तांकर मोरल वैल्यू रहबा कथा इन ऑर्डर टू सप्लाई द अनइंटरप्टेड एसेंशियल सर्विसेज एज वेल द इक्विटेबल राइट फेमस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देथिले
फाइनाली कमिंग टू द डीपीएसपी तो एम्प्लॉय मान ऊपर आ किसी तो सुप्रीम कोर्ट राय देले एम्प्लॉय मान ऊपर किसी रहिलानी नेक्स्ट कमिंग टू द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कि जोटा पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दिया है डीपीएसपी रो माने हला कि स्टेट तार से डीपीएसपी रे किछु लिस्ट अछि आर्टिकल 35 रु आर्टिकल 51 फिर आर्टिकल 36 रु 51 सेथिरे अछि डीपीएसपी रे किछि आपनकर प्रोविजंस दिया है किछि आपनकर सब्जेक्ट्स दिया है ए सब्जेक्ट्स ऊपर स्टेट पर्टिकुलर स्टेट ता ऊपर लॉ लेजिस्लेशंस करियो बाध्य नुह स्टेट चाहिए करिपारे स्टेट चाहिए न करिपारे बट जदि स्टेट ताको जे नेकी ना कला सो दैट जदि करे सेटा वेलफेयर स्टेट हो जोटी की सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस सब गारंटेड ही रहियो तो डीपीएसपी गुटे हला कॉर्नर स्टोन गोटे इंपोर्टेंट बैड रॉक आम घर तैयारी कला आम कौन तले पथर दौरान बाली पोतुंट मैंने कौन दिज आर दि बेसेस जहाँपर आम घर तैयारी करा सेमती गोटे लॉ तैयारी कला गोटे एक्ट तैयारी कला बेले डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गोटे बैड रॉक गोटे इंपोर्टेंट जिनस से फिलोसफी को लेकिन स्टेट लॉ पास करे राइट आर्टिकल 37 कहूँ जिते किसी स्टेट किसी लॉ तैयारी करिवो किसी लॉ को एनाक्ट करिया जीवो इट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विथ डीपीएसपी डीपीएसपी रो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी रो जो फिलोसफी अछि ताको से कंट्रावेन करिवो राइट आर्टिकल 51 सी गुटे अछि लास्ट जो हमर पार्ट्स रो जो डीपीएसपी रो सी कहूँ आम स्टेट को रेस्पेक्ट दबो इंटरनेशनल ट्रिटी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को सब रेस्पेक्ट देवा दरकार राइट इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखिए कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिशन एमती सब देखिए से बहुत कंट्री भी देखाई जो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट सब कर देखाई कि राइट टू स्ट्राइक इज ए फंडामेंटल राइट राइट तो आमर आर्टिकल 51 सी कौन कही कि इंडिया तक रेस्पेक्ट दब इंडिया ताको रेस्पेक्ट देखिए ताठू किसी शिक्षक ताठू किसी इन्स्पायर हम और लॉ एक्ट कर भेरी थैंकफुल भेरी भेरी थैंकफुल आंबेडकर साहब जी कि लीगली बाइंडिंग करना कोर्ट रे एनफोर्सिबल करना जदि करते मे बी आज के डेट राइट टू स्ट्राइक मे बी फंडामेंटल राइट थैंक्स very very my great respect to the B.R. Ambedkar sir right in this way आमर बहुत बहुत केसेस बहुत जजमेंट्स दिया फाइनली कहला ना ना इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट विल नॉट बी कंसीडर राइट व्हेन द एसेंशियल सर्विसेज केम इनटू द पिक्चर देन फाइनली हम टोटल जितकी समरी को हम वाइंड अप करबा टोटल हम गोटे कॉमन नटसेल देखा आम जदि स्ट्राइक रे जाउछंती वी मस्ट हाव लेजिटिमेट यूज करिया आम काम करिया किंतु जेमिति कि पब्लिक सर्विसेज अफेक्ट न हो आम गवर्नमेंट को बारंबार परसुएट करिया कि आमर जहाँ किसी जेन्युइन डिमांड्स अछि आम ताको फुलफिल करा जाऊ आमर पर्सनल इंटरेस्ट में पब्लिक इंटरेस्ट आम पर न हो पीसफुल मोड ऑफ अचीवमेंट साइलेंट प्रोटेस्ट करा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सब प्रायोरिटीज देवा दरकार because many peoples are associated or many peoples are dependent upon us call for the government interface government को बारंबार प्रोसेस कर प्लीज हियर आवर वॉइस प्लीज हियर आवर ग्रीवेंसेस देन जो भी स्ट्राइक करियो दैट मस्ट बी रीजनेबल दैट मस्ट बी जस्टिफाएबल दैट मस्ट बी रैशनल युक्त युक्त हवा कथा right so dear friends dear my colleagues and my state government employees before go for a strike please think once again about the larger public interest those people are dependent upon you think once again finally thank you for hearing my lecture for being with me this much of time if you truly enjoyed my video during this entire time please do have a like my video share it among your friends and subscribe my channel until the next video god bless
Thank you. Stay in home. Have a good day. Good night.